So today's good morning everyone. Exams are very near as we know. So these are some important topics that you should learn. First topic is objective of auditing. Auditing is what is the meaning of auditing? Auditing means the verification of the accounts, rechecking of the accounts. That is called as what? Auditing. And auditing is done by what? A special person. The person should have the expertise, knowledge into that field. The qualification is required for auditor is CA, chartered accountant. Only a chartered accountant can do the audit, otherwise normal person can't do the audit. So what is objective of auditing? Main objective is to express an opinion on financial statement. What is the opinion? Whether the financial statements are true or fair, or whether these statements are free from the frauds or manipulations, window dressing. That the auditor has to verify the financial statement and books of account to certify the truth and fairness of the financial position and operating results of the business. So this is a duty of the auditor to verify the financial statement. So actually ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटिंग का वो ये है कि आपको जो है पता करना होता है कि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, जो इंटरनल ऑडिटर ने बनाया है वो प्रॉपर है या नहीं है। आई मीन उसमें कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं किया है, वो दिखाना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑडिटिंग का मीनिंग ही ये है, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑडिट को ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ पे ऑडिटर क्या करता है, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है कि वो क्या कंक्लूड किया है उसने, जो किसके अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, कुछ मैनिपुलेशंस तो नहीं किया है, वो बताना होता है। ऑडिटर हैज़ टू वेरीफाई। ऑडिटर ये भी वेरीफाई करता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो ट्रू है या नहीं, फेयर है या नहीं, फाइनेंशियल पोजीशंस जो है वो, एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट्स आर कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी और सेकेंडरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमने यहाँ पे दो कैटेगरीज में एक्सप्लेन किया है, एक बताया है प्राइमरी और दूसरा बताया है सेकेंडरी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ट्री डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। So primary objective is to examine the accuracy of books of account, and second one is to express opinion on financial statements. And on the other hand, if I'm talking about the secondary objective is detection and prevention of errors. Next is detection and prevention of frauds. Now come to the primary objective. Let us see in detail the primary और मेन ऑब्जेक्टिव है ना, दूसरा नाम हम इसे मेन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं ऑडिट का, इज टू एग्जामिन द एक्यूरेसी एंड जेन्युइननेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो जेन्युइन है या नहीं, वो एक्यूरेट है या नहीं, एंड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Afterward, the person expresses the opinion on financial statement. An auditor has to examine whether the accuracy of the books of accounts, vouchers, and other records to certify that profit or loss account disclosed are true or fair view of financial results of the business for the financial period, and the balance sheet on a given date is properly drawn up to the reveal a true or fair view of financial position of the business. Books of accounts includes the following. अब क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें लेजर अकाउंट होगा, सब्सिडरी बुक्स होगा, कैश होगा, अदर अकाउंट्स होगा, either it is in the form of return or through printouts होगा, through electronic storage devices होगा like pen drives or something. So therefore the auditor should undertake the following step. First thing, the auditor should verify the arithmetical accuracy of the books of account कि जो उसमें arithmetics यूज़ किया है that is proper or not, accurate है यानी वो चेक करेगा। सेकेंड होगा verify the existence and value of the assets and liabilities of the companies, वो करेगा। थर्ड होगा verify whether all the statutory requirements on maintaining the books of accounts have been compiled with. After such verification, once he will verify कि सब कुछ बराबर है, then the auditor is expected to express his opinion. हम कभी भी क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं अकाउंट्स को। तो जब आप as an auditor, when I verify everything is proper, there is no fraud, there is no error, then I will express my opinion on whether the financial statement present a true or fair view of the state of affair of the company for the period under audit or not. After that, let's move to the second one, that is what secondary objective. Ab what is secondary objective? Let us see. The secondary objective.
The secondary objective of audit is डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड. मतलब पहले तो हमको डिटेक्ट करना है कि एरर है कहाँ पे, फ्रॉड है कहाँ पे. एंड व्हेन आई गेट टू नो कि ये एरर है, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, देन इमीडिएटली आई विल ट्राई टू प्रिवेंट error as well as fraud as soon as possible. This is my duty as an auditor. It is often misunderstood that detection and prevention of error and fraud is the basic motive of audit. People think that audit of financial statements guarantees that they are free from errors and frauds. But the auditor basic objective is to give his opinion on truthfulness and fairness of the financial statement. And as auditor I have to check कितना इसमें truth है या भी नहीं. I will play very smart role there because I am acting as an auditor. So I have to play very smart role. I have to check whether there is a genuineness कुछ है, truthfulness है, fairness है, नहीं है, वो check करना होता है. The auditor basic duty is this only to give the opinion at one point of time when I'm checking the accounts. But at the end I will realize कि भाई यहाँ पे error है, यहाँ पे कुछ fraud है, then I will express my opinion. This is something is fishy here. So this is the duty of the auditor. And while doing so, he has to determine whether the financial statements are free from errors and fraud. So it becomes the next objective incidental to the primary objective. और first objective is my to express the opinion only. अभी मैं सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है मुझे और कुछ नहीं है. बट एट द सेकेंड ऑब्जेक्टिव व्हाट आई डिसाइडेड कि आई विल चेक कितना ट्रूथनेस है, कितना फेयरनेस है ना, वो कंपनी कितना ट्रूली अपनी अकाउंट्स को प्रेजेंट कर रहा है. एज अ अकाउंट एक्सपर्ट आई शुड नो हाउ टू चेक दैट. अकाउंटिंग एरर्स आर मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग एंट्रीज. अकाउंटिंग एंट्रीज है ना आपको सो अकाउंटिंग एरर्स आर मिस्टेक्स ना इन रिकॉर्डिंग वाल पोस्टिंग सम एंट्रीज. हाँ चलो डेबिट का क्रेडिट में चला गया, क्रेडिट का डेबिट में आ गया, P&L का ट्रेडिंग में चला गया, तो दैट इज़ नॉर्मल. बट दीज डेविएशंस आर नॉट फ्रॉडलेंट एंड जर्नली अनइंटेंशनल. इसमें ये कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा. आई कंसिडर अनइंटेंशनल है. सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग अनइंटेंशनली, that is called as what? Error. That mistake is called as error. But on the other hand, what is fraud? Fraud is when you are doing intentionally. You want to harm, है ना, you want to misrepresentation of the facts that can cause harm to the victim of fraud by acting on the basis of the false fact. That is called fraud. जब आप intentions आपके गंदे हैं और आप कुछ manipulations कर रहे हो कंपनी में, आप कुछ भी विंडो ड्रेसिंग करके दिखा रहे हो, आपके पास कुछ मतलब यू आर शोइंग समथिंग एल्स एंड योर इंटेंशन, देन दैट इज नोन एज व्हाट? फ्रॉड. एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन बोथ इज द इंटेंशन. फ्रॉड में भी इंटेंशन है, मिस्टेक में भी इंटेंशन, एरर में भी इंटेंशन है. एरर में जो इंटेंशन है वो कैसा है, वो मतलब कि दैट इज़ नॉट पर्पसफुली हो गया, अनइंटेंशनली. और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैसे इंटेंशनली है, जान पूछ कर रहे हो फ्रॉड. यू नो दैट इज फ्रॉड बट स्टिल यू आर डूइंग. इफ मिस्टेक इज इंटेंशनल इट बिकम्स फ्रॉड. अगर मिस्टेक इंटेंशनल हुआ तो फ्रॉड बनेगा, अगर मिस्टेक अनइंटेंशनल है तो फ्रॉड नहीं बनेगा. द ऑडिटर हैज़ टू वाउच द ट्रांजैक्शंस, verify the assets and liabilities, and undertake various other audit procedures to ensure that the financial statements are free from error and fraud so as to present a true and fair view. However, his opinion is based on the facts and figures presented to him. So there is a possibility of error and deeply laid fraud being unrecognized. Sometimes it happens. So auditor cannot be held responsible for undetected errors, and neither frauds nor he is required to give an opinion on efficiency of the management and future prospects of the business. So this is very important answer. I hope you understand. If you have any doubt or any query, you can contact me. Thank you for watching my YouTube channel.